students, welcome back to the new session of Science Class First, chapter number 5, that is about food and shelter for animals. So, students, in the previous chapter, we have learned about the different types of animals, but today we are going to learn about the different food habits of the animals and also their living places, means where do they live, what are the shelters of different animals. This we are going to learn and explore today. So the topics which we are going to learn about is, that is, what do animals eat and home of animals. All right. See, the very first activity to do is that match the animals with their foods. यहाँ पे हमें इन सभी animals को उनके type of food के साथ match करना है which they eat. So for example, if we talk about this animal, it is lion. A lion is the flesh or the meat of other animals. So we are going to match it with this food item. Then next, it is dog, which likes to eat the bones. Alright, so we'll match it with this food item. Then next, it is hen. And hen likes to eat what? Grains. So we'll match it with this. And then next is horse. Horse likes to eat grass. So we'll match it with this. Alright. Now, next the topic is, what do animals eat? So सभी animals क्या खाते हैं? So as humans need food to do work and grow, animals also need food to live and grow, and different animals eat different foods. What they saying? कि जैसे कि सभी ह्यूमन बींग्स को, हम क्या है, वी आर ह्यूमन बींग्स, हम सभी को फूड की रिक्वायरमेंट है वर्क करने के लिए, ग्रो करने के लिए. सिमिलरली एनिमल्स को भी फूड की रिक्वायरमेंट है टू लिव एंड टू ग्रो. एंड एवरी डिफरेंट एनिमल ईट डिफरेंट टाइप ऑफ फूड. सभी एनिमल्स सेम टाइप ऑफ फूड को कंज्यूम नहीं करते हैं. ऑलराइट, सी सम एनिमल ईट प्लांट्स और ग्रास. अब बात करते हैं पहले हम कुछ एनिमल्स की जो केवल प्लांट्स और ग्रास को खाते हैं. एग्जाम्पल, काउ, हॉर्स, गोट, एक्सेट्रा. राइट, ये केवल प्लांट्स या प्लांट्स और ग्रास को खाते हैं. सीड, एन अमेजिंग फैक्ट that a frog has a long sticky tongue rolled up inside its mouth to catch the insect. See, frog के पास क्या एक long sticky tongue होती है जिसे वो बाहर निकालते हैं. एंड जैसे ही कोई इंसेक्ट उस टंग पे आके स्टिक हो जाता है, फ्रॉग अपनी उस टंग को अंदर की तरफ इनसाइड इट्स माउथ रोल करता है एंड देन इट ईट्स अप दैट इंसेक्ट. राइट. Now next we come to what? That some animals eat grains. अब कुछ ऐसे animals हैं जो केवल grains को खाते हैं, like hen, mouse, pigeon. Alright. Next, some animals eat insects. अब कुछ ऐसे animals हैं जो कि insects को खाते हैं. For example, spider, frog, lizard. Alright. Next, some animals eat the meat or flesh of other animals. यानी कि अब कुछ ऐसे भी animals हैं जो कि दूसरे animals का meat यानी कि flesh को खाते हैं अपने food की form में. Like we have a lion, tiger, vulture. All these are the animals which eat the meat of other animals. See, we should be kind to animals and look after them. We should give them healthy food and they should be kept in a clean shelter. What they saying? कि हमें क्या एनिमल्स के लिए काइंड होना चाहिए, उनकी हमें केयर करनी चाहिए, उन्हें हमेशा हमें हेल्दी फूड देना चाहिए. एंड जिन एनिमल्स को आप पालते हैं या जिनमें अपने घर के आसपास रखते हैं, उनके शेल्टर को भी हमेशा क्लीन रखना चाहिए. Alright. Now see, write G for grass eating animals and F for flesh eating animals. So now students, they have given you some pictures of animals, and now what you have to do is that those animals, वो animals जो कि grass eating animals है यानी कि grass खाते हैं, उनके लिए आप G लिखेंगे, capital G, and जो other animals के flesh meat को खाते हैं, you will write F for them. For example, first of all, this is horse. It is grass eating animal, so we will write G for it. Then this is lion, जो कि flesh eating animal है, so we will write F for it.
cat. And cat is what? Cat can eat both the things. That is what it can eat animals flesh also, and also it can eat some vegetarian products also. We'll not write anything for it. Next, this is deer. Deer loves what? Eat too grass. So we'll write again G for it. If you want, then you can write F because it is flesh eating animal also. ये flesh भी खाती है. And this is tiger. Tiger again एक flesh eating animal है. And next is goat. Goat क्या है? Goat grass eating animal है, केवल grass खाती है. Alright. The next topic which we have is that is home of animals. So now we will talk about the animals' home. We live in our home, right? हम अपने घर के अंदर रहते हैं. Now our home. अब हमारा home क्या करता है स्टूडेंट्स? हमें heat, rain, cold इन सभी चीजों से प्रोटेक्ट करता है. Similarly, इसी तरीके से animals also live in their homes. Animals भी अपने घर के अंदर रहते हैं. And ये जो animals के homes होते हैं, वो home animals को भी heat, cold and rain से safe रखते हैं, protect करते हैं. It keeps the animals. उसके साथ साथ animals के जो home है या shelter है, वो उन्हें उनके enemies से भी safe रखते हैं. Different animals live in different homes. जैसे कि हर एक animal की eating habit different है. Similarly, हर एक animal का shelter यानी कि home भी different होता है. For example, lion. This is lion. Lion lives in a den. Lion कहाँ रहता है? In a den. Lion के shelter को, home को den कहा जाता है. Similarly, hen. Hen lives in a coop. Hen कहाँ रहती है? Hen रहती है coop में. Then rabbit. Rabbit lives in a burrow. Rabbit burrow में रहते हैं. Birds. Birds lives in a nest. Birds nest पर रहती हैं. Then bee. Bee lives in a hive. Bee कहाँ? Hive में रहती है. Dog. Dog lives in a kennel. Dog क्या है? Dog kennel में रहते हैं. Amazing fact again. Koel is the only bird that does not make its own nest. It lays eggs in the nest of other birds. See students, if we talk about the birds, so birds usually अपना nest बनाती हैं as a home. उसी के अंदर वो रहती हैं, अपने बेबीज को भी इसमें रखती है, अपने एग्स भी उसी के अंदर ले करती हैं. बट इफ वी टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर बर्ड नेम्ड एज कोयल, सो कोयल एक बहुत ही क्लेवर बर्ड है एंड एक अकेली ऐसी बर्ड है जो अपना नेस्ट नहीं बनाती. ये अपने एग्स को दूसरी बर्ड्स के नेस्ट में ही ले करती है. राइट नाउ see what they have given you. They have asked you to complete this table. Now what you have to do in this table is they have given you the names of some animal. You have to write the food and home of that particular animal. Alright. So first of all we have hen. Hen क्या है? Hen का food क्या होता है? Hen eat grains. Hen grains को खाती है. So we'll write grains over here. Alright, like this. And home of animal, hen का home क्या है? We call it coop. Alright. Similarly, dog. Dog का food क्या होता है? Dog loves to eat flesh. Dog flesh खाते हैं. Alright. And home क्या है? Kennel. 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 Next we have rabbit. Rabbit का food. Again what? Rabbit loves to eat grass or grains. And home of animal, this is what? Burrow. Rabbit का home क्या होता है? Burrow. Lion. Lion का food is flesh. Again, lion flesh खाती है. And lion का जो home होता है, that is den. D-E-L, den. Then birds. Birds likes to eat grains. Birds grains भी खाती हैं. And कुछ birds flesh भी खाती हैं. So we could write flesh also over here. Right? And birds का home क्या होता है? That is nest. Birds कहाँ रहती हैं? They live in nest. Alright. So this we have completed. जो different animals given थे, उनकी food and उनके homes को हमने यहाँ पे लिख दिया. Now let us recall the chapter. So just like human beings, animals too need food to live and grow. Human beings की तरह ही animals को भी food की requirement होती है to live and to grow. Secondly, कुछ animals ऐसे हैं जो plants खाते हैं. Some animals
eat grass and some animal, कुछ animals insects को भी खाते हैं. Then some animals eat flesh of other animals, कुछ animals other animals के flesh को भी खाते थे. And कुछ ऐसे animals हैं जो कि plants as well as the flesh of other animals, यानी कि plants को भी and other animals के flesh दोनों को भी खाने वाले कुछ ऐसे animals हमारे nature में present है. And the last, different animals have different kinds of home. हर एक particular animal का एक different kind of home होता है जहाँ पे वो रहते हैं. So like this, we have completed the chapter over here. That's all for today. I hope you must have understood about the different feeding habits of the animals and also about their shelters. Let's meet in the next session with a new and exciting topic. Till then, keep learning and thanks to all.